Hi friends, welcome to your channel that is Chemical Engineering Online for you. In today's video, we will discuss about what is cooling tower, what are the different types of cooling tower, how cooling tower work, and what are the industrial application of cooling tower. Before to start today's video, I am requesting all of you, please subscribe my channel. Also like, and after watching my all this video, I need your valuable comment or feedback. Whether that is good or bad doesn't matter, but I need your comment for my motivation or my suggestion. If you want an article or a video on any topic as you require, you can comment that also. So if you want to read article on types of cooling tower and principle of cooling towers, I have given one link in comment box. You can click on that link, or simply you can google as different types of cooling towers pharma guides. You will get first article. Thank you. Okay, we can start with our basic or main question, that is what is cooling tower. एग्जैक्ट व्हाट इज कूलिंग टावर, आखिर कूलिंग टावर ही है क्या, इसे ही हम स्टार्ट करते हैं. सो ओके, कूलिंग टावर इज हीट एक्सचेंजर. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर which is largely used in all type of industry, whether that is pharmaceutical, chemical, or maybe any another industry, dyes, chemicals, pigments, and any type of pulp industry tools. This is very largely used. This is largely used a heat exchanger. What is purpose of this cooling tower? Cooling tower cool the water which come from the process से जो वार्म वाटर आता है, हॉट वाटर आता है, दोज वाटर विच कम फ्रॉम प्रोसेस, दैट हॉट वाटर का कूल करने का काम ये कूलिंग टावर करता है. कूलिंग टावर कूल द वार्म वाटर विच इज कम फ्रॉम प्रोसेस में भी डिपेंड अपॉन मे बी दैट फ्रॉम हीट एक्सचेंजर. किसी भी चीज़ से वो आ सकता है. प्रोसेस का जो भी रिक्वायरमेंट है HVAC सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है. दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन HVAC सिस्टम. सो अगर HVAC सिस्टम से भी जो रिटर्न आता है वो वार्म वाटर आता है. सो मेन ड्यूटी ऑफ कूलिंग टावर इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ दैट वार्म वाटर. और जो भी उसका प्रिंसिपल है उसके हिसाब से डेल्टा टी मेंटेन रखना, उस सर्कुलेशन सिस्टम का डेल्टा टी मेंटेन रखना, ये कूलिंग टावर का मेन फंक्शन. इन शॉर्ट, कूलिंग टावर इज अ heat exchanger, or it is a utility. It is a very important utility which is used in all type of industry, whether it is fertilizer, chemical, oil and pet. So next question is what is working principle of a cooling tower? कूलिंग टावर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सो आंसर इज cooling tower work on evaporating cooling. What principle? Evaporating cooling. evaporating cooling क्या है? What is evaporating cooling? इसका मीनिंग इसके मतलब वर्ड में ही लुका है. evaporating cooling मतलब evaporation प्लस कूलिंग. बहुत दो ऑप्शन इसमें, दो ऑपरेशन हो रहे हैं. दो, वन इज इवापोरेशन एंड सेकंड वन कूलिंग. इवापोरेशन किस चीज़ का हो रहा है? वाटर का ही हो रहा है. कूलिंग किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है. कौन कर रहा है? एयर कर रहा है. सो इतना याद रखिए. व्हेन हॉट वाटर एंड कोल्ड एयर comes in contact in cooling tower, when hot water and cold air comes in contact in cooling tower, then this cool air absorb the heat from hot water or warm water, or it reject it into atmosphere. ओके, क्या करते हैं वो? कोल्ड वाटर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते एटमॉस्फेयर में. सो कूलिंग टावर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवापोरेट. नाउ वी कैन स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स. सो कूलिंग टावर्स के टाइप्स क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स? सो बेसिकली देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स. फर्स्ट इज नेचुरल कूलिंग टावर्स and second one is nothing but mechanical drafts cooling tower. So natural means obviously as it work on natural cooling.
इफ़ यू डोंट नो नेचुरल कूलिंग यू कैन गूगल इट। मैं शॉर्ट में यही बताता हूँ कि उसमें कुछ हमें एक्सटर्नली कोई फोर्स वगैरह नहीं करना पड़ता है। वो नेचुरल जो एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट का असर जो होता है ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट का जो एटमॉस्फेयर का जो असर होता है उसी के ऊपर वो अपने आप कूलिंग हो जाती है, उसे हम नेचुरल कूलिंग करते हैं। सो नेचुरल ड्राफ्ट में यही होता है, एयर जो हम उसमें यूज़ करते हैं वो नेचुरल रहते हैं, वो हम कोई फोर्सफुली डालते नहीं है, कोई उसका एयर का फ्लो हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है। जो नेचर में एयर का फ्लो है उसी वही फ्लो से हम कूलिंग टावर को वही फ्लो मिलता है, और वही फ्लो से उसी फ्लो के कैपेसिटी के हिसाब से कूलिंग टावर वाटर को कूल करता है। सो इन नेचुरल कूलिंग टावर वी यूज air source as a natural air source. And what about in mechanical draft cooling towers? In mechanical draft towers we use air source, maybe that blower, not mostly blower, fan connected with motor. So ये फैन क्या करता है, अपना जो रिक्वायरमेंट है एयर का, जो टारगेट जितना भी टीआर चाहिए हमें उसके हिसाब से ये एयर सप्लाई करता है। अगेन मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। वो कौन से? वन इज इंड्यूस्ड ड्राफ्ट मैकेनिकल कूलिंग टावर एंड सेकंड वन इज फोर्स्ड ड्राफ्ट मैकेनिकल कूलिंग टावर। एज पर ही नेम्स इंड्यूस्ड और फोर्स्ड, इसके हिसाब से मतलब एक में एयर इंड्यूस की जाती है और एक में फोर्सफुली डाली जाती है। मतलब डाली तो दोनों में ही जाती है, बट जो टाइप रहता है, जैसे कि प्रेशर में भी होता है कि पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर, एग्जैक्ट उसी टाइप में। ओके उसी टाइप में भी यहाँ पे एक थोड़ा सा कैटेगराइज उसको किया है कि हाउ कैन वी फोर्स द एयर, और हाउ कैन वी मतलब एयर कैसे हम कूलिंग टावर के अंदर छोड़ते, उसके हिसाब से according to that principle this mechanical cooling tower also has two types, and that is nothing but induced draft cooling tower and mechanical draft cooling tower। अब induced draft में क्या होता है, mechanical draft में क्या होता है, वो भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। now we can learn in details in difference between induced draft and mechanical draft cooling tower. Also we can study what is the difference between natural draft cooling tower and mechanical draft cooling towers. We can discuss difference between natural draft cooling tower and mechanical draft cooling tower. So in natural draft cooling tower we require a tall tower। टावर का रिक्वायरमेंट कैसा है? टॉल है। इन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर टावर रिक्वायरमेंट इज tall, but it mechanical does not necessary. We don't necessarily want a tall tower because we can manage the heat exchanging data, और क्या बोलते हैं हीट एक्सचेंजिंग का जो कैपेसिटी है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। हाउ? विथ फोर्स ऑफ एयर वी कैन एयर का जो भी अपना सोर्स है उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। In natural draft cooling tower we use atmospheric air or natural air, so the airflow in natural draft cooling tower is comparatively low as compared to the mechanical draft cooling tower. Now third is फैन और ब्लोअर नॉट रिक्वायरमेंट्स इसमें होता ही नहीं है। सो इन नेचुरल ड्राफ्ट में फैन और ब्लोअर नहीं होता है। अब बट इन मैकेनिकल ड्राफ्ट्स में फैन और ब्लोअर दोनों में से एक होगा ही। लो हीट ट्रांसफर बिटवीन वाटर एंड एयर, सो जो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर का जो रेट है, कैपेसिटी है इन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, द हीट ट्रांसफर रेट एंड कैपेसिटी is quite low as compared to the mechanical draft cooling tower. To increase the capacity of natural draft cooling tower we need to increase the tower height, so that's why that required much more space also. But in a mechanical draft cooling tower we don't need to increase the height much more. We need to increase, but not exact like natural draft cooling towers. Also space required by mechanical draft cooling tower are also less, very low or less as compared to natural draft cooling tower. Second one, operating cost. Operating cost नेचुरल में तो सब एयर सोर्स तो फ्री है, तो वी मतलब कोई चार्जेस नहीं लगना है हमें, लग नहीं रहा है हमें एयर के लिए। बट इन मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर वी फोर्स द एयर, सो
वो एयर जनरेट करने के लिए जो पावर कंजप्शन है, दैट पावर कंजप्शन का कॉस्टिंग इसमें मैकेनिकल ड्राफ्ट्स में ऐड हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट टू मच कॉस्टली एज कम्पेयर टू द टीआर। अगर टीआर में हम जाएंगे नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल टीआर में कि 1 टीआर कॉस्ट ऑफ नेचुरल टीआर एंड नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का 1 टीआर का कूलिंग कॉस्ट एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट्स कूलिंग का 1 टीआर का कूलिंग कॉस्ट अगर कंपेयर करेंगे तो मैकेनिकल ड्राफ्ट्स में ही मतलब लोएस्ट में हो जाएगा। Now difference between induced draft and mechanical draft cooling tower. Induced draft mechanical cooling tower and forced draft mechanical cooling tower. So in induced draft, it pull out air. Induced draft में क्या होता है, एयर पुल आउट हो जाता है टावर से, यानी फोर्स ड्राफ्ट में एयर फोर्स किया जाता है इन कूलिंग टावर। Second one is required motor power in induced draft is low as compared to the mechanical draft cooling tower. Third, air entering velocity is low in induced draft, क्योंकि induced draft में हम air suck कर रहे हैं, so air induced entering velocity is low and air out velocity is high and exact opposite रहेगा forced draft में। In short, in induced draft cooling tower, air entering velocity is low and air exiting velocity is high. And in mechanical draft cooling tower, forced mechanical draft cooling tower, air entering velocity is high and air exiting velocity is low. So this is the main or basic difference between induced draft and mechanical draft cooling towers. I hope you understand what is cooling tower, its principle and its different types. And also we know that industrial application of cooling tower also. Cooling tower cool the warm water which is come from the process. I hope कि आपको कुछ मेरे वीडियो से यूजफुल इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो या केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, किसी भी तरह से आपका अगर केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेशन है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी अगला टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले मिल जाए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।